तो बेटा yesterday we were doing to cure infertility. ठीक है, हमने methods to, we were talking about methods to cure infertility. तो सबसे इजी मेथड फर्स्ट इज, सबसे इजी है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मीन्स रिलीज ऑफ स्पर्म, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है, किस केस में ये किया जाता है, दिस इज इन केस वेयर जो मेल्स है प्रोड्यूस लेस स्पर्म्स, स्पर्म काउंट जो है वो लेस है, उस केस में हम जनरली IUI करते हैं. और भी कई केसेस है बट मेनली ये केस है. IUI में क्या है, सीमन ऑफ मेल is collected, it is washed, selection of healthy sperms, and then with the help of needle these sperms along with semen obviously, right, so it is injected in the यूट्रस ऑफ फीमेल, विजाइना में नहीं. नेचुरल अगर इंटरकोर्स होता है तो सीमन इज रिलीज्ड इन विजाइना, वेयर एज इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द सीमन वॉज्ड हेल्दी स्पर्म्स जिसमें ज्यादा हो, है ना. हम क्या करते हैं, मेल्स में से 2-3 टाइम सीमन इकट्ठा करते हैं, उसमें से हेल्दी स्पर्म सफिशिएंट नंबर में हम लेते हैं, एंड देन इट इज इंजेक्टेड in the uterus of the female when at the time of ovulation. ठीक है, ये जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट हम क्या करते हैं, फीमेल के मतलब जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है हम 5th डे से अल्ट्रासाउंड करना शुरू करते हैं, और हम उस दिन देखते हैं कि किस दिन ओव्यूलेशन हुई है. ठीक है, तो जिस दिन ओव्यूलेशन है उसी दिन या एक दिन बाद, क्योंकि एग रिमेन्स एक्टिव फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स, तो हम जिस दिन ओव्यूलेशन वाला दिन है, पहले दिन पता चल जाता है अभी तैयार है, ओव्यूलेशन होने वाली है, उस दिन उससे अगले दिन 2-3 दिन हम रेगुलर जो है वो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. ठीक है, हम दिस इज ए नेचुरल, फर्टिलाइजेशन नेचुरल होगी, प्रेगनेंसी नेचुरल होगी, सिर्फ क्या आर्टिफिशियल हुआ है, इंसेमिनेशन. सीमन इज इंजेक्टेड in the uterus of the female by a needle, right, that is IUI. ठीक है जी. अब सेकेंड आ जाता है बेटा, that is गिफ्ट. फुल फॉर्म है गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. जनरली ये हम किस केस में करते हैं, कि जनरली it is done if
female does not produce healthy eggs, तो हम डोनर एग्स लेते हैं, ठीक है। या फिर इन केस प्रॉपर ओव्यूलेशन does not happen, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, so in this case eggs are collected from female, either donor female या फिर सेम फीमेल बट ओवरीज में से ही हम एग्स निकाल लेते, जनरली डोनर फीमेल में से। एंड स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल, स्पर्म्स भी हम कलेक्ट करते हैं, एग्स भी हम कलेक्ट करते हैं। बोथ eggs and sperms are injected in posterior या हम कह देते हैं ampulla part of fallopian tubes, ठीक है। दोनों एग्स एंड स्पर्म्स हम इकट्ठे, सो दैट फर्टिलाइजेशन अकर्स नेचुरली, ठीक है। जनरली यहाँ पर डोनर फीमेल यूज की जाती है, ठीक है, जनरली, ठीक है। मेल ऑब्वियसली मेल तो जो भी है, फीमेल जनरली कोई उसका रिलेशन में कुछ उसकी कंसेंट से हम किसी और के एग्स ले, ठीक है। सो आपके लिए इतना ही बहुत है कि गिफ्ट में एग्स एंड स्पर्म्स बोथ आर टेकन आउट पहले एंड देन साइमल्टेनियसली दे आर इंजेक्टेड in the fallopian tubes of the female so that natural fertilization and next natural process occurs, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थर्ड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, or we can say test tube baby, in vitro fertilization, test tube baby। इस केस में हम क्या करते हैं, वही semen is collected, washed, healthy sperms isolated, फीमेल में भी हम फीमेल इज पहले हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्टेड विथ FSH, ताकि मोर देन 1 eggs
mature at same time. जनरली तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है, बट हम FSH इंजेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली, सो दैट 1 से 2 3 4 6 जितने एग्स मैच्योर हो सके वो हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपर ओव्यूलेशन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है. सेकेंड स्टेप है eggs are collected from female. ठीक है, हम उनको बाहर निकाल लेते हैं. थर्ड है eggs are mixed with sperms in a test tube. जिससे fertilization more than one zygote. ठीक है, जितने एग्स है, अगर 6 एग्स है तो हो सकता है 3 4 जो है वो फर्टिलाइज हो जाए. एंड देन allowed to divide in test tubes. बेबी पूरा नहीं बनता है टेस्ट ट्यूब में, बट जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड इन द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, eight celled embryo, it is transferred in fallopian tubes of mother. This is called as ZIFT. फुल फॉर्म क्या है? zygote intrafallopian transfer. Zygotic intrafallopian transfer. So zygote at 8 cell stage या embryo at 8 cell stage is transferred in the fallopian tubes. If embryo is more than 8 cell, or you can say or 16 cell, then it is intrauterine transfer. Means embryo is transferred in uterus. अगर 8 सेल्ड है तो हम उसे फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करते हैं. अगर 8 सेल से ज्यादा 16 सेल्ड है, then it is transferred in the uterus, and both these comes under ET, embryo transfer. है ना, एक हमने किया था गैमीट ट्रांसफर, गिफ्ट किया था. Another is embryo transfer, test tube babies. 2 types की है, ZIFT है and IUT है. ZIFT is when embryo is transferred at 8 celled stage in the fallopian tubes. Here 16 celled stage embryo is transferred in the uterus. Is it okay? ठीक है जी.
तो लगता ऐसे है कि फिर तो बच्चे होना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, किसी के नहीं हो रहे, ये आर्टिफिशियल टेक्निक से यूज करो तो द चाइल्ड कैन हैव द, सॉरी, द कपल कैन हैव द चाइल्ड। बट these procedures are invasive procedures, अंदर तक काम करना पड़ता है। these are difficult, lot of hormones are given in the female, ठीक है। पूरी तरह से यूट्रस को प्रिपेयर करना पड़ता है, एग्स हेल्दी हो, स्पर्म्स हेल्दी हो, यूट्रस हेल्दी हो, उसके बाद भी हम नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। नेचुरल मेथड is the perfect method. Artificial methods highly costly, कोई सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। फीमेल को बहुत सारे हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं, उसकी पहले सुपर ओव्यूलेशन के लिए हॉर्मोन्स देंगे, मतलब बहुत सारे एग्स बने, फिर एलएच देंगे ताकि ओव्यूलेशन हो, फिर एग्स निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, फिर हम यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए हॉर्मोन्स देंगे। अगर बाय चांस विद गुड लक प्रेगनेंसी हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, तो पूरे 9 महीने इतने सारे हॉर्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा ठीक ठाक से डेवलप। सो दिस इज द मेन प्रोसीजर, highly you can say, but these have disadvantages at later stages, क्योंकि इतने सारे हॉर्मोन्स हम फीमेल्स को देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही होते, right? And the main cause of infertility nowadays is PCOD, and PCOD is mainly किस लिए? hormonal imbalance, and hormonal imbalance के दो reasons है, एक mental stress, दूसरा obesity, ठीक है। तो इन दो चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, फॉर द नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी। इस कारण मैं +2 स्टूडेंट्स को दोबारा कहती हूँ, पढ़ाई तो करनी है, ठीक है, बट ऑलवेज टेक ½ फॉर योर हेल्थ। सैर करने जरूर जाओ, हवा लगेगी ठंडी, बाहर निकलोगे, अच्छा ऑक्सीजन जाएगी और ओबेसिटी भी कम होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? ठीक है। तो आज से ही सबने, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, सबने आधा घंटा जरूर सैर करके आनी है। इफ यस गिव मी थम्स अप, जल्दी से जाएंगे कि नहीं? जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये याद रखना है बेटा, फ्रॉम माई कैरियर ऑफ 20-25 years मुझे पढ़ाते हो गए, और इवन मोर, आई हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रन ऑफ +2, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी तो कैसे चले, ठीक है। और आधा घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, राइट? डू इट, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स टू क्योर इनफर्टिलिटी। और उसके बाद आ जाता है बेटा, देन देयर कम्स STDs या STIs। यू टेल मी, name the STD which does not affect the sex organs। जल्दी से नेम द STD which does not affect us। अब ये नेट से नहीं देख के कि फटाफट से नेट से देखो और फिर बताओ, अपनी जीके से बताओ। यस, एनीबडी? हरमनजोत, हरमनजोत, अतीवराज, कोई बता दो बेटा, ये तो पता ही है। एनीबडी टेल मी, टेल मी, डू यू नो दिस? छोड़ दो बुक्स, छोड़ दो, छोड़ दो बुक्स, छोड़ दो, सोच के देखो। डू यू नो और यू डोंट नो? और मैं बताऊंगी तो आपको वो ये तो हमें पता थी। मैम HIV।
HIV, बिल्कुल ठीक है बेटा। HIV डज नॉट अफेक्ट द। अशनीत बेटा, अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपका माइक ऑफ है ना? सो HIV is the STD which does not affect the sex organs, ठीक है? But it is sexually transmitted disease that you, ठीक? तो STDs कौन कौन से हैं? That is syphilis, gonorrhea, genital herpes, warts, HIV, hepatitis B, right? These are the main. There are many other STDs, but these are the main STDs. जल्दी से साइफिलिस बताइए जल्दी से. इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जल्दी से ट्राई. जल्दी से आप खुद अपना याद करके बताइए कि इनका क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स है. ट्राई टू रिमेंबर एंड राइट इन योर कॉपी. जल्दी से जल्दी से. कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रिपोनिमा पैलिडम. यस, ट्रिपोनिमा पैलिडम. लिख भी लो बेटा. गनोरिया, इट इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज. और इसका है नेसीरिया. NEISSEREA. नेसीरिया गनोरिया स्पीशीज यही है. जेनिटल हर्पिस, इट इज ए वायरल डिजीज. herpes simplex virus. It is herpes simplex virus. Then warts, viral disease, human papilloma virus, है ना? डिजीज यहाँ पे आ जाता है एड्स. Human, it is also a viral disease. Human immunodeficiency virus. ये भी हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज. हेपेटाइटिस बी वायरस ही हम कह देते हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है. देन क्लेमाइडियाज, देन देयर आर ट्राइकोमोनियेसिस. ये सब भी है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट. हेपेटाइटिस बी
AIDS, genital herpes. These are not cured, but they can be prevented. लिख लो यहाँ पे स्टार डाल के genital herpes, AIDS, and hepatitis B cannot be cured fully. They can be treated, symptoms treat कर सकते हो. They cannot be cured, but they can be prevented. All other disease, syphilis हो गया, gonorrhea हो गया, warts हो गया, chlamydias हो गए, ठीक है, trypanosomiasis हो गए, they are cured fully. They can be cured. ठीक है, आप लिखो all other STDs can be treated completely. Can be treated completely. ठीक है, and they are कैसे STDs, sexually transmitted diseases. These are transferred from infected partner to the other partner during sexual intercourse. Right? That's why they are STD, sexually transmitted diseases. ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं बेटा, एक मैंने आपको करवाना था, that is hormonal regulation of menstrual cycle. बेटा जनरली इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में. ठीक है, एंड यू नो दैट 28 डेज की साइकिल है. ये 28th डे है और ये फर्स्ट डे. कैसे, मतलब पहली तारीख को शुरू हो जाता है? ऐसा नहीं. तो फर्स्ट डे क्या है? 5th डे. दिस इज day 1. We count day 1 on the start of menstruation. ठीक है, so this is 1 to 5 days. Menstrual phase. जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उसको हम फर्स्ट डे मानकर चलते. ड्यूरिंग दिस फेज लो FSH, लो LH, लो estrogen and progesterone. सभी हॉर्मोन्स जो है वो लो. Then there comes second phase. फिफ्थ डे से लेके 14th डे, तकरीबन 10 दिन का. So 10 days, this phase is called as proliferative phase, also called as follicular phase.
During this phase, there is increase in FSH. This FSH, it causes development of primary follicle, right? This primary follicle forms secondary follicle, tertiary follicle, and then finally Graafian follicle. साथ में यहां लिख रही हूं द फॉलिकल्स में क्या है, आउटर लेयर आपको पता है, थीका लेयर secretes lot of estrogen. जैसे ही थीका लेयर सेकेंडरी फॉलिकल बना, थीका लेयर बननी शुरू हुई, ठीक है, थीका लेयर सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। तो इसमें प्रोलिफरेटिव फेज में दो मेन हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन। एफएसएच ने तो फॉलिकल बनाया, ईस्ट्रोजन ये भी क्या कर रही है, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। एंड सेकेंड मेन क्या कर रही है, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन मीन्स उसके सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो cells of the endometrium divide and endometrium of the uterus becomes thick during proliferative phase या follicular. ठीक है। At the end of proliferative phase क्या हुआ, lot of estrogen. ईस्ट्रोजन ने क्या किया, ये मैं रब कर रही हूं जरा, फीडबैक देखना जरा। ईस्ट्रोजन ने क्या किया, inhibits secretion of FSH and promotes LH secretion. ठीक है जी। अब LH सर्ज, सर्ज मीन्स एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, LH सर्ज नियर 14th day and it causes rupturing of Graafian follicle causing ovulation. So 14 to 15 days के बीच में क्या होता है,
ovulation, that is release of egg from the ovary. ठीक है जी. And there starts next phase. Sorry. नेक्स्ट फेज आ जाता है बेटा सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज. नेक्स्ट आ जाता है सिक्रीटरी फेज, ल्यूटियल फेज. इसमें क्या है? FSH लेस, increase in LH. LH converts ruptured Graafian follicle into corpus luteum. है ना? इसमें येलो कलर्ड फ्लूइड भर देता है. ल्यूटियल फ्लूइड changes into corpus luteum. So corpus luteum is formed due to LH. ठीक है जी. corpus luteum secretes lot of progesterone and estrogen. थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ज्यादा. और ये दोनों अब क्या कर रहे हैं? दे मेंटेन थिक एंडोमेट्रियम. corpus luteum maintains thick endometrium. If no fertilization occurs, progesterone in blood increases. ये इंक्रीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है. Inhibits LH. प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने से क्या हुआ? LH इनहिबिट होगी. कॉर्पस ल्यूटियम degenerates when LH secretion decreases. कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा. जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस. कौन बना रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम ही तो बना रहा है. अगर वो डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज कर जाएगा. प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज कर दिया, thick wall of uterus या endometrium of uterus is not maintained. जब प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करेगा? एंड देन
again there starts menstruation. FSH पहले से कम है, LH की इनहिबिशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो गया, और जिसके कारण यूट्रस की वॉल स्लफ ऑफ हो गई, टूट गई, एंड देयर स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएशन. Is it okay? But if, अब ये बताओगे, what if fertilization occurs? हाँ जी, anybody? स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ कि 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई, बिटवीन 14 to 15th डे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इन एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, 14 to 15 डेज के बीच में. देन zygote starts cleavage in fallopian tubes. ठीक है, resulting in formation of 8-celled morula, 8 to 16-celled morula in fallopian tubes. This morula, it forms blastocyst, which, ध्यान से देखना है, which moves in uterus after 3 to 4 days of fertilization. इसका मतलब 17th 18th डे जब सिक्रीटरी फेज था तो ये कहां पे चला गया, यूट्रस में चला. ठीक है, अभी इस टाइम हाई LH एंड हाई प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड, अभी ये है. देन implantation of blastocyst after a week of fertilization means approximately 21 days में 21 days of menstrual cycle जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 14 डे है, यहाँ पे तकरीबन 21 डेज जो है यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है. Is it right? Then इम्प्लांटेशन हो गई, हाई प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड. कौन सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम. इट इनहिबिट्स LH. तो बेटा टेल मी, क्या कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा,
LH तो बन नहीं रहा। Yes, ma'am. Corpus luteum will get degenerated, then who will secrete progesterone? फिर तो अबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन तो हाई चाहिए प्रेगनेंसी में, एलएच है नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन कौन बनाएगा? बोलो बेटा, टेल टेल समबडी। हाँ, गलत नहीं। हाँ बेटा बोलो। Trophoblast, they will secrete the human chorionic gonadotropin, which will act like LH and बिल्कुल maintain. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज देयर इज secretion of HCG by trophoblast. It maintains corpus luteum, and corpus luteum keeps on secreting progesterone, which maintains thick endometrium. ठीक है? Function of HCG is similar to LH, and remember that corpus luteum is maintained in first trimester. उसके बाद ये shrink कर जाता है। Till then placenta itself या after, not till then, after that, after 3 months, placenta itself starts secreting lot of progesterone and estrogen to maintain itself. बेटा पहले 3 महीने क्रूशियल होते हैं, बिकॉज उसमें प्लेसेंटा मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है हॉर्मोन। ठीक है, बट आफ्टर दैट प्लेसेंटा अपने आप को खुद मेंटेन करता है। इसके बाद पहला 3 महीने होता तो चलो कभी भी कुछ हो सकता है, बट फर्स्ट 3 months आर क्रूशियल when HCG maintains corpus luteum that secretes lot of progesterone. After that, placenta itself secretes lot of progesterone and estrogen. Is it okay? ठीक है जी, ये समझ में आई? Yes, ma'am. चलिए अब हम जल्दी से एक पोल इनिशिएट मैं करती हूँ बेटा। ठीक है, करना, वो करके देखना क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, दिख रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ओव्यूलेशन द कोलैप्स्ड ovarian follicle shrinks and becomes filled with yellow fluid to form. ठीक है, क्या बनाता है देखो जरा, आंसर फटाफट से मार्क करो। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय FSH, HCG, प्रोलैक्टिन या LH? कर लिया बेटा? यस और नो, अपना माइक ऑन करो और मुझे बताते चलो।
Next question. When both ovaries are removed from a rat, which hormone is decreased in blood? Oxytocin, prolactin, estrogen या gonadotrophic releasing factor? आपको दिख रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस? The cellular layer that disintegrates and regenerates again and again in human is? Question number 5th. Which of the following hormone is active during proliferative phase of menstrual cycle? Proliferative phase में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव है? Question number 6. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Ovulation कब होती है? At the mid secretory phase, end of proliferative phase, end of secretory phase या beginning cycle? Withdrawal of which of the hormone is immediate cause of menstruation? FSH, FSHRH, प्रोजेस्ट्रॉन की एस्ट्रोजन? सारे आई होप आपको आते होंगे। बेटा मार्क करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 8. In the human female menstruation can be deferred. Deferred का मतलब है कि हम किसी कुछ हार्मोन देके मेंस्ट्रुएशन रोक सके, ब्लीडिंग फेज रोक सके। कैन बी डेफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। नीट के क्वेश्चंस है सारे ये। कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच एलएच या एफएसएच एलएच दोनों। हम किस तरह से क्या देके किसी भी गर्ल में मेंस्ट्रुएशन को टेम्परेरी रोक सकते हैं। नाइन्थ चलो छोड़ दो अभी, ये मैच द फॉलोइंग है, छोड़ो इसको भी। और 10th देखिए। द रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन, सर्ज इन एफएसएच, सर्ज इन एलएच या प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। इज इट ओके? कर लिया बेटा? कर दूं, खत्म कर दूं? यस मैम। चलिए, तो बेटा किए आपने। आई होप आई विल गेट द रिजल्ट। मुझे अभी तो नहीं मिल रहे हैं, बट आई विल सी कि मुझे कैसे ये मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए। एवरीबडी टेल मी कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो गई है? अब मुझे ये बताइए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कोई और डाउट है? डू यू वांट मी टू रिवाइज एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस चैप्टर? नो मैम। देख के बताओ, एवरीबडी टेल मी। फर्स्ट यूनिट में से एनीथिंग यू वांट मी टू रिवाइज? हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा, वो तो 6-7 है, वो तो याद कर ही लोगे आप। 7 हॉर्मोन्स है ना? समझाने वाली चीज बताओ मुझे, कोई कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया।
फर्स्ट यूनिट में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ. Yes, everybody, tell me quickly. हाँ जी, नवदीप, ओनिशा, पल्लवी, tell me.